students, we are going to start with the chapter 23, conjunction. Now, first of all, I will tell you that in this chapter we are going to learn about three types of conjunction, that is coordinating conjunction, correlative conjunction and subordinative conjunction. Okay, so before I start with that three conjunction, I'll tell you what exactly the conjunction is. The conjunction means जिस वर्ड के हेल्प से हम दो डिफरेंट हो या सेम मीनिंग के या सेम आइडियाज के सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, इफ आई से आई इन माई राइट हैंड, सी जस्ट मेरे राइट हैंड में एप्पल है और मेरे लेफ्ट हैंड में ऑरेंज है, तो मैं ये बोलूँगी आई हैव एप्पल, आई हैव ऑरेंज. नो, आई विल से आई हैव एप्पल एंड आई हैव ऑरेंज. सो ये जो मैंने एंड बोला, वो एंड जो है वो है कंजक्शन, बिकॉज कंजक्शन के हेल्प से मैंने मेरे दो सेंटेंस को ज्वाइन किया. तो यहाँ पे आप जैसे हाईलाइटेड वर्ड देख सकते हो, बट, सो, यट, ईदर, नीदर, बोथ, नॉर. फिर हमारे पास सबऑर्डिनेटिव में है बिकॉज, ऑल्दो, फिर एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फिर लीस्ट, ऑर्डर, अनलेस, प्रोवाइडेड. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये होते हैं कंजक्शन. क्यों? क्योंकि इन कंजक्शन की हेल्प से हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. हमारा फर्स्ट जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. रीटा वॉज रीडिंग अ बुक एंड श्रेया वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर. नाउ यहाँ पे जो है क्या समझ में आ रहा है कि पहले मैं आपका इसको डेफिनेशन पढ़ूंगी सो यू विल अंडरस्टैंड. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन टू कॉजेज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस मीन्स दो ऐसे कॉजेज को ज्वाइन करता है जिसकी इक्वली इम्पोर्टेंट, मतलब दो ऐसे सेंटेंस को ज्वाइन करता है. मतलब जब आप सेंटेंस को ज्वाइन करते हो तब आपको पता चलता है कि इसका मीनिंग इक्वली है, दोनों का इक्वली. बिकॉज रीटा वॉज रीडिंग अ बुक मीन्स यहाँ पे जो रीटा की एक्टिविटी वो भी इंपॉर्टेंट है. श्रेया वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, श्रेया की एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है. तो दोनों की जो एक्टिविटी हो रही है वो दोनों को इंपॉर्टेंट है. इसके लिए हमने क्या किया, एंड का इस्तेमाल किया. फिर सेकेंड सेंटेंस में यू विल से देयर इज अ यूज ऑफ बट. नेहा इज फ्रेंडली बट हर सिस्टर इज रिजर्व. यहाँ पे उसकी सिस्टर का जो नेचर है वो भी इंपॉर्टेंट है, भले जैसा भी है. नेहा का जो नेचर है वो भी इंपॉर्टेंट है, भले जैसा भी है. फ्रेंडली है, रिजर्व्ड है, दैट इज देयर चॉइस, बट बोथ द पर्सन इज इंपॉर्टेंट. सो दैट जब हम दोनों सेंटेंस का इंपॉर्टेंट इक्वली होता है और उसमें जो हम कंजक्शन यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन. ओके, कोरिलेटिव कंजक्शन में क्या होता है, the word that are highlighted are correlative conjunction. This are set pair of conjunction that makes a thought together. Means क्या होता है कि जब आप दो थॉट, मतलब या तो आप ये करोगे या तो आप वो करोगे. either you will going to do this, either you will going to do that. ओके, तो ये ईदर वर्ड आया, जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में ईदर ही दिया हुआ है. ईदर, नाइदर, नॉर, और, एंड, बोथ मीन्स दो टाइप जो दो थॉट को मिक्स करता है. जब वो सेंटेंस में दो थॉट को मिक्स करता है उसे हम कोरिलेटिव, जो मतलब रिलेट करता है दोनों चीज को. ओके, ईदर वीरा और नीता विल पिक अप द आइटम रिक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट. देन नीदर मोहन नॉर रोहन टर्न्ड अप फॉर प्रैक्टिस. यहाँ पे क्या हुआ, ना ही ये ना ही वो प्रैक्टिस के लिए आए. या तो वीरा या तो नीता मार्केट से सारे आइटम्स पिकअप करेंगे. तो यहाँ पे दो चीज हो रहा है. क्रिश इज बोथ अ सिंगर एंड अ कंपोजर. यहाँ पे भी दो चीज. जब हम दो चीज की बात करते हैं उसे हम कोरिलेटिव
कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो थर्ड आता है वो है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन आर यूज्ड टू लिंक और कनेक्ट अ डिपेंडेंट कॉज विद द मेन कॉज इन द सेंटेंस। यस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो आइडियाज या दो सिचुएशंस को कनेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो सिचुएशन है उसके ऊपर दूसरी चीज डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो दो सिचुएशंस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ये मैंने चैप्टर आपको बहुत ही इजी वे में समझाया है। अलोंग विद दिस मैंने एक और वीडियो अटैच किया है। आई होप ये वीडियो आप पूरा देखें तो आपको पूरा समझ में आएगा। सो लेट्स सी दैट वीडियो। Hello friends, how are you all? In this video lesson, we are going to discuss very exciting and useful video lesson, that is conjunction. Overall, in this video lesson, we are going to discuss what is conjunction, the types of conjunctions, and coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. These are very important, friends. Don't miss this video. Watch till the end. Welcome to Sri Spoken English. This is Srinivas and this video lesson 69. What is conjunction? Friends, observe carefully the title conjunction. Junction means the place which connects two places, right? So in the English grammar also, in the same way, conjunction is a word that joins or connects two words or phrases or clauses together. You can use a conjunction to link words, phrases and clauses. Example, Vijay and Sanjay are the best friends. In the first example, Vijay and Sanjay, these two words connected by the conjunction word and. Yes. Observe the second example. My bike key is on the table or in the cupboard. So here two phrases like on the table, in the cupboard are joins together with the conjunction or. Let us take the third example. Though she studied hard, she could not get first rank. In the third sentence, which is the conjunction, friends? Yes, you're right. Though. Though is the conjunction. Here, she studied hard and she could not get first rank. Two clauses are combined together with the conjunction though. So friends, don't think conjunction always should come between the words. Sometimes the conjunction comes beginning of the sentence also. Friends, these conjunctions also known as connectors because conjunction connects two phrases or clauses. It is also known as linkers because it can link two words or phrases. So friends, basically conjunctions, there are three types of conjunctions in English grammar. They are conjunctions, first one, coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. So basically there are three types. Yes, what are the coordinating conjunctions? Let us have a brief look. Coordinating conjunctions, for example, for, and, nor, but, or, at, and so. So these coordinating conjunctions also we can memorize easily the famous acronym FANBOYS.
See every letter of these conjunctions F, A, N, B, O, Y, S. Fanboys. F stands for, A stands for and, N stands for no, B stands for but, and O stands for or, and Y at, and S stands for so. So these famous acronym, yeah, we can memorize for a long time. Fanboys. Coordinating conjunctions are fanboys. For example, for example, we listened eagerly for he bought news for our families. Next, and of course, she didn't speak to anyone and nobody spoke to her. And nor, I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed. But they rushed to the hospital, but they were too late. Or I will go shopping, or I will go camping. Yet, Cali was a convicted criminal, yet many people admired him. Next, so I was feel hungry, so I made myself a sandwich. So friends, these are coordinating conjunctions. Yeah, we can remember these coordinating conjunctions with the famous acronym. Yeah, what is that? Fanboys. Next, we move on to the subordinating conjunctions. These are, yes, especially these are divided into simple categories. Yeah, some subordinating conjunctions describes comparison. They are than, rather than, whether, as much as, whereas. These are, yeah, described about the comparison. Next, we can move on to the some subordinating conjunctions. Yeah, these conjunctions describing the time after, as soon as, until, whenever, now that. Next, concession. So in our daily speech, so we can, yeah, sometimes we can use these conjunctions: though, although, even though. Relative pronouns: who, whoever, whom, whomever, whose. These are relative pronouns. Of course, some subordinating conjunctions describes the reason. If you ask why are you doing like this? Yeah, to give answer for that questions, yeah, reason, because, since, so that, in order to, as. Next, we move on to the some other subordinating conjunctions. Condition. Yeah, conditional sentences like see, if, only if, unless, provided that, assuming that. Next, yeah, places. Some subordinating conjunctions, yeah, indicate the places. Example, where, wherever, wherever you go, my network follows. This is the city where I born. So just like we can use such examples. And some subordinate conjunctions, yeah, also, of course, they are relative adjectives: that, whatever, which, whichever. And next, some subordinate conjunctions describes the manner: how, as though, as if. These are subordinating conjunctions. Next, we move to the correlative conjunctions. What are the correlative conjunctions? Correlative. So these conjunctions always should together two words. Example, both and, either or, neither nor, whether or, not only but also. Not only but also. Yeah. Such, that, and some other examples. Yeah, they are. Let us have brief look with some other suitable examples. Both and. First one, both and.
The company deals in both hardware and software. See here, we can use the correlative conjunction both and. So the two conjunctions together with a sentence, that is called correlative conjunctions. Next we move on to the second one, either or. I will eat either carrots or peas for dinner. Next, neither nor. Natalie likes neither milk nor cream cake. That means she doesn't like both, neither nor. That gives negative meaning. Next, whether or. Example, do you care whether we have noodles or rice for dinner? Next, not only but also. So that means both. For example, he not only studied hard but also works well. Yeah, so he studied hard and works well, both. Next, such that, yeah, it's such a tiny kitchen that I don't have to do much to keep it clean. Next, scarcely when. Yeah, this is most important. Scarcely when. How do we use in example? Scarcely had she entered the room when the phone rang. Next example, no sooner than. Yes, how do we use in example? No sooner did he enter the room than he saw a snake. So these are the beautiful correlative conjunctions which we can use in this way. So thank you friends. I think these conjunctions will help you to develop your spoken English as well as your writing skills even. So thank you very much for your support and keep watching our videos and keep learning English. So thank you and catch you later in next video. Now you have watched entire video and I am sure you are cleared with this chapter. Okay, so the exercise I will share in PDF form in your WhatsApp group. Okay, so I'll end this chapter with this video. Next week we will go through the other chapter, that is 24th chapter, sentence and its kind. Okay, so have a good day. Thank you. Take care of yourself.